start it. By chance अगर आप remove हो जाओ ना, rejoin, okay? Yes. Okay. Okay. Good afternoon, class. So in the last class, I had asked you people to go through this Google Colab notebook in which we were working on the Iris dataset. How to load the dataset from the library, that is basically the dataset, because Iris is already present in this particular Python package. Then how to load it, how to read the header and the head files and the head data points and the tail data points, what is the shape, summary, how to read the description of the data set, what exactly we mean by mean and 50%, what exactly the information we are getting from it. And we call the feature names. Features name are nothing but the column names, or I should say the variables that is being required in the system. Then we defined the data set into this format. What we have to go for, we have to have columns having the feature name as well as the target values. Getting my point, class? हमने last class में यहाँ तक कर लिया था. Yes, ma'am. Okay. तो भी अगर मैं यहाँ पर क्लास अगर इसे प्रेजेंट करूँ, that I'll simply write iris_df, which is nothing but the features only. So it will be just showing you the values of the features, just like over here. See. So till this point, we are having only the values of sepal length, sepal width, petal length, and petal width, because in the iris data, iris_df, we are just passing the value of iris data. That are the features only. And after that, in the target, we actually define the iris data set with the value of iris type. Okay, so the iris type is this. Then we converted the value, because initially when we fetched out the values, we got the information that the data set is having, complete data set is having the values of the target in the form of 0, 1, and 2, because it is a categorical problem. In the categorical problem, it is actually showing you zero numerical value as 0, 1, 0, 0, 1, and 2, basically class 0, class 1, and class 2. So we redefined this target variable in the name of actual variable, that is basically the setosa, virginica, and versicolor. How we defined it? We actually created a function converter in which we defined if the iris type, the class type, is basically equal to 0, then it will be called as setosa. If it is equal to 1, then it will be called as versicolor. Else, if it will be called as virginica. After this, we defined this particular converter value to the iris type. So abhi tak jo iris type mein values aa rahi thi, that is 0, 1, and 2, now it will be reframed by applying this value of the converter function. That is nothing but setosa, versicolor, and virginica. तो जहां जहां पर class 0 आ रहा था वहां पर setosa आ गया, जहां जहां पर class 1 आ रहा था वहां पर virginica आ गया, versicolor आ गया, और जहां पर 2 था वहां पर virginica आ गया. After that, what we did, we concatenate किया हमने क्या करा, फीचर्स along with the class label हमने उसे concatenate किया. अगर तुम इसे ऐसे नहीं रीड करते और अगर तुम अपने लोड करके लेकर आते हो, फाइल को लोड करके लेकर आते हो, कहां से, तुम्हारे डेस्कटॉप पे अगर सेव्ड है वहां से तुम इसे लोड करते हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव दिस कंप्लीट सेट. हमें ये दिखेगा, इट विल बी हैविंग द फीचर्स along with the class label. After this, again we did the same kind of thing, we did the description and all that, we got the same information जो हमें पहले मिल रहा था. Now after this हम लोगों ने visualizations किया था, जो मैंने तुम्हें बताया था कि exactly what we infer from all this. So अगर इस वाले ग्राफ को देखोगे तो SNS is basically a matplotlib is actually a very great visualization tool for the Python. So it is basically have bulk of visualization, but the only factor is whenever we have to dignify it or proper manner में उसको label out करना है, so matplotlib actually restrict itself. So we have another library that is basically called a Seaborn. Seaborn is as good as matplotlib, but it is having much greater visualization techniques. So over here, pair plot. If I want to plot pair plot in my using matplotlib, I can't do that. I have to create a function and then I have to plot it.
So in the name of function, it can be anything in the name of the function. But over here, when I'll use Seaborn library, I have a pair plot. I'll just call that function as pair plot. I'll pass the argument as your data points, and I'll say u. U का मतलब क्या होता है? Let me tell you what we mean by u. कोई बताएगा मुझे? मैटप्लॉटलिब में भी किसी ने यूज किया होगा है u, तो क्या होता है उसका मतलब? So class is just if I'll take two variables as x1 and x2, I have an output like this. So let it be 0, sorry, not 0, I'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So this is my data points. These are my data points. These are my features. So I'll simply say that these two classes belong to A, B. Again, it is A, and B. So how many data points actually belongs to class A? Yes, class? Who will tell me? 3. How many class? 3. 3. How many for class B? It's 2. 2. Fine. So now we have two different labels, class A and class B. So if I'll plot my X and Y in such a manner, I'll plot something related to count. Suppose I want to plot X1 and X2 का मुझे count plot बनाना है. तो count plot का मतलब क्या हुआ? On y axis I have the values of count of variable x and y, and on x axis I'll have my features x1 and x2. So I can simply say that suppose let it be the count of x1 is nothing but 10, let it be, and count of y can be 50. So now this is basically 15. So now I can simply define it as this is, let it be 5, and this can be 10. Now it is for this shaded region. If I'll mention hue, तो hue का मतलब क्या है? वो ऑटोमेटिकली दो वैल्यूज के लिए डिफाइन करेगा फॉर क्लास ए एंड क्लास बी. ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लेगा कि उसको किसके लिए क्या प्लॉट करना है, एंड इट विल शो यू दैट दिस बिलोंग्स टू क्लास ए, the shaded region, and another shaded region, this one, this belongs to class B. So it will simply show you that this is for class A, this shade, and this shade belongs to class B. So this is exactly what is happening over here. यहाँ हमने पेयर प्लॉट किया है. So यहाँ पर सबको दिख रहा होगा Setosa, versicolor and virginica. So it says red color for Setosa, blue color for virginica, and something lighter grayish blue for the virginica. Versicolor के लिए blue है. So over here Setosa is normally distributed. दिख रहा है सबको? From both the edges it is almost same. But over versicolor and virginica, we can simply say that slightly right skewedness is there. Getting my point, class? तो अगर मैं यहाँ पर इसको पिक्टोरियल में देखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे बहुत क्लैरिटी से पता चल रहा है दैट सिटोसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वर्सिकलर और वर्जिनिका आर ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ सेकंड प्लॉट में, थर्ड प्लॉट में और फोर्थ प्लॉट में बहुत क्लैरिटी के साथ फिजिबल है. Getting my point, class? Yes. Is it okay? First years? Yes, ma'am. Okay. Let me proceed further. So heat map, last class में मैंने बताया था what exactly heat map shows. Heat map actually calculates the correlation first. Over here it is actually dot core is nothing but the correlation. Correlation between all the parameters that has been passed. So over here if I'll call a function dot core bracket, that means it is actually correlating your x1, x2 and y also at times. But normally हम feature में कभी भी correlation label के साथ नहीं करते, तो features are correlated. So it is actually doing what? x1 और x2 को y axis पे भी लेगा और x axis पे भी लेगा. So we know that x1 का correlation x1 के साथ तो highest होगा, so its value is always 1. Similarly, x2 का x2 के साथ correlation highest होगा, it's always equal to 1. But x1 और x2 over here, x1 and x2, it depends on how much correlation is there. So it will be in between 0 to 1, or I should say from -1 to +1, it will be correlation showing. Similarly, over here, it will be showing from -1 to
+1. तो ये कोरिलेशन फैक्टर हमें यहाँ से पता चल रहा है. सो लाइटर हीट मैप में फायदा क्या होता है? इट शोज द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कलर्स. तो कलर से क्या पता चलता है? सो लाइटर पिंक शेड इज बेसिकली शोइंग यू द मैक्सिमम कोरिलेशन. सो वी नो सेपल लेंथ ओवर है. सेपल लेंथ के साथ हाईली कोरिलेटेड है. सेपल विड्थ के साथ हाईली कोरिलेटेड है. पेटल लेंथ के साथ हाईली कोरिलेटेड है. एंड पेटल विड्थ के साथ कोरिलेटेड है. नाउ डायगोनली दे ऑल आर कोरिलेटेड. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1 because they are correlated to themselves. Now, if I say sepal width is correlated with sepal length, so I am getting it to be darkest color. Darkest color is nearing to this point. That means they are negatively correlated. Means they are not at all correlated. Same thing is happening for this also. Sepal width with sepal length. So they both are coming out to be the same one. Similarly, if I talk about petal length and sepal width, so they both are coming out to be the same one. That means they both are not correlated because it is nearing to minus 0.4. Same goes with petal width with your sepal width. So the values are coming out to be same. So now highest correlated values are कौन से variables है जो highly correlated है class? Yes, first years. Who will tell me? कौन से values है जो highly correlated है? No beta Kanchan, not diagonal one. Diagonal वाला themselves correlated. So x1 का correlation x1 के साथ कोई value नहीं दे रहा है मुझे. Similarly x2 का correlation x2 के साथ मुझे कोई value नहीं दे रहा है. I need something that are nearing to these two values. That means this one. 1 से लेकर के 0.2 के बीच में जो values है, they can show you some correlation. So more closer to 1 values will be highly correlated. कौन बताएगा class? Petal length and And petal petal width. length and petal So width. petal length and petal width are highly correlated. So see, petal length with petal length is 1, but petal length with petal width is 0.96. So 0.96 is almost closer to 1. That means they both are highly correlated. Similarly, petal width with petal length is again having 0.96. That means they both are contributing the same amount of information. So इन दोनों में से किसी एक को हम drop करके चल सकते हैं. Same goes over here also. Petal length with sepal length. Can I say they both are correlated? Yes, first years. Petal length with Yes, ma'am. sepal length. So they are correlated. Similarly, petal width with sepal length is again correlated. Why? Because they both are also correlated. So we can drop any one of them, but right now in our analysis we are not dropping it because we have to just study how actually the machine learning algorithm gives us the information. So from this point, what I did, I actually created another data frame in the name of iris underscore df1, which is equal to iris d underscore df. iris underscore df के अंदर ऑलरेडी डेटा फ्रेम है. कौन सा? जिसके अंदर सारे फीचर्स हैं और क्लास लेबल्स हैं. After this, what I did over here, because for my machine learning algorithm, I have to pass features and your labels separately. So let's talk about iris underscore df1 drop. Drop किसको करने के लिए बोल रहा है? क्लास लेबल्स को ये ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है. So we are dropping the class labels. एक्सेस 1 का मतलब क्या होता है? अगर एक्सेस 0 होता तो रोज को डिलीट करता, ड्रॉप करता. अगर 1 लिखा है तो पूरे कॉलम को ड्रॉप करेगा. सो राइट नाउ वी हैव टू ड्रॉप द कॉलम. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली ड्रॉपिंग दिस iris टाइप. ये पूरा iris टाइप का कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा. वी आर लेफ्ट ओनली विद sepal length, sepal width, petal length and petal width as features. Okay, after this, after dropping this, we simply went for target df, which is nothing but iris data type. So now I am relabeling my labels. So for iris d underscore df1, now iris underscore df1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 वेरिएबल्स हैं और target underscore df is again a data frame जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, that is iris data, iris underscore type class label है इसके अंदर. Is it okay class? Again after this point over here, क्योंकि हमने क्या बोला है, हमने ड्रॉपिंग कर दी है. सो नाउ वी आर हैविंग x and y. So we reframed it. My capital X is having the feature values and my small y is having the label values. Clear हुआ class? Yes. So
नाउ क्लास जस्ट सी, वी वर हैविंग लेबल्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कितने कॉलम्स थे? फीचर्स के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स थे इनिशियली? 4. We took only one sepal length. Can anyone let me know why? Can anyone let me know why? We were having 4. We had taken only one. Why? Secondly, answer देखो, y is taking only the sepal length. In fact, I should say, let me change it to sepal width. लेबल तो क्लास लेबल तो हमारे पास सिर्फ एक ही था जो कि आयरिस टाइप था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, हमने सेपल लेंथ और सेपल विड्थ रखा है। व्हाई? बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं क्लास, कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन। कोई मुझे बताएगा लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों की इक्वेशन क्या थी? y is equals to Y is x equal plus to b. ax plus c. y is equal to ax plus X plus b. b. So where b is the intercept and a is the slope. Yes, miss. How many variables are there right now? 2 variables. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? फीचर्स। हाउ मेनी फीचर्स आर देयर? Y is dependent variable, X is independent variable. How many features are there right now in these two? Features किससे represent होगा class? कौन सा वेरिएबल फीचर रिप्रेजेंट करेगा? XY. X या Y? X. So if X is showing you the features, तो Y is actually having the Table. तो ये यहां तक सबको क्लियर है? आज के बाद हमेशा याद रखना, कैपिटल X फीचर्स, स्मॉल Y लेबल। ओके? Yes, Now, miss. in our program, what we had done, we had taken one variable, one feature, that is sepal length. Who will tell me why I had taken only one variable, one feature, sepal length, and मैंने उसके लिए corresponding output कह दिया है sepal width is the corresponding output. Why? कौन बताएगा मुझे? बहुत easy है, equation देखो ध्यान से। Because we want our data to be linearly independent. वो हमने हीट मैप में चेक कर लिया तो हमें पता चल चुका है। यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, अब यहाँ से हम अपनी मॉडल क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। इक्वेशन देखो जरा ध्यान से, मैंने लास्ट क्लास में दो चीजें समझाई थी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेथड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और मैंने बताया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है। सोचो, as everybody should answer. Mom, It should simple linear regression में we have only one feature. exactly, we have only one feature. Getting my point class? I hope Yes, सबको याद होगा, हम लोगों ने x y एक्चुअल y प्रेडिक्शन निकाला था और y एक्चुअल निकाला था एक टेबल में। मैंने एक होमवर्क भी दिया था जहां मैंने बोला था x इज नथिंग बट दी डेटा इनपुट एंड y इज बेसिकली द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। याद होगा सबको? So X for simple linear regression model, what we are going for, we are simply going with one variable, one feature. So that's the only reason we simply said sepal length. So now I have in my own terms, let's go for sepal width as a output. So after this, till this point, यहाँ तक सबको clear है? आई कैन डू, अभी आगे जब जाऊंगी थोड़ा सा और आगे जब हम काम करेंगे तो विल गेट टू नो कि ये जो सेपल लेंथ और सेपल हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, कांट वी गो फॉर मोर वेरिएबल्स, आई मीन मोर फीचर्स जो कि हम लोग कर सकते हैं। So after this, what we have to go for, because I have only x, I'll divide my x into two different types of values. दो values क्या है? मैंने x को दो values में डिफाइन करा। एक को कह दिया कि भैया तुम तो ट्रेनिंग के लिए काम आओगे, और दूसरे को बोल दिया तुम टेस्टिंग के लिए काम आओगे। तो बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा? साइज कितना रखते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट? 20%. 20%. So it is now 20%. इसका मतलब क्या हुआ? If I have 150 values, 20% of 150 will be how much?
30. So 30 values will be for X test and remaining 120 values will be for Training test. same Training. same we are doing for Y also, because जब हम X को डिवाइड कर रहे हैं तो उतने ही अमाउंट से हमारा Y train और Y test भी डिवाइड होगा. Fine class. So 120 values for Y training and remaining 30 values for Y test. So this is what exactly यहाँ पर train test split जो है ये splitting का काम करता है. ओके ये फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा. अब let me tell you one thing class. The libraries we need to identify for this. Class sklearn is the library or the package that is having all the model functions related to the machine learning. So sklearn from sklearn is basically the package. Dot model underscore selection. मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन से मॉडल पे काम कर रहे हो उसको आपको सिलेक्ट कराना है. गेटिंग माय पॉइंट. तो मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन के अंदर देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, जिसमें से एक मेजर है दैट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. बिकॉज जब हम मॉडल बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, आई हैव दिस एज अ मॉडल, दिस इज कमिंग एज एन इनपुट 1, this is coming as an input 2, and I'll have output. So now these two are the model parameters. So what exactly we are giving in the model underscore selection, we are actually passing the function or calling the function that is actually defining what exactly the arguments you have to take for the model creation. Fine. Learning curve बाद में समझाऊंगी. Similarly, from sklearn dot linear underscore model, that means those models that have the linear relationship is being called by using this model linear underscore model. Is it okay? We have something called as linear regression. So it is having a relationship in terms of linearity. That is the only reason it comes under linear model. So from sklearn dot linear underscore model import linear regression. Clear हुआ? Yes, Is it ma'am. okay? Yes, ma'am. After this, मीन एब्सोल्यूट और ये सब हम बाद में बताएंगे. सो अगर मैंने यहाँ पर ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं लिखा होता, इसको इंपोर्ट नहीं किया होता, सो डेफिनेटली मेरी स्प्लिटिंग नहीं होती. तो टिल दिस पॉइंट यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा और क्लास ये सिंटेक्स ऐसे का ऐसे ही होता है, ये कहीं चेंज नहीं होगा. x underscore train x underscore test y underscore train y underscore test को क्या करा है कि हमने x को इन टू पार्ट्स में डिवाइड किया एंड सिमिलरली y को भी हमने इन टू पार्ट्स में डिवाइड किया बाय कॉलिंग द फंक्शन एज train test split करेगा इन विच मैनर, किसको लेके, एज एन इनपुट x को. तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है x, दैट इज डिफाइनिंग x train and x test. Second argument is y, that is basically the y train and y test. So x and y को हमने पास ऑन किया, जो कि हमने इनिशियली सेल नंबर 26 में डिफाइन किया था. उसके बाद टेस्ट साइज, टेस्ट का मतलब हमने क्या कहा, x और y को स्प्लिट करना है, कितने परसेंटेज से करना है, दैट इज 0.33. 0.33 का मतलब कितना हुआ, 33%. 33%. So now it is purely your will how much you want to have. Because I have only 150 rows, the data set is not very high. So what I'll do, I'll take the default value. Then there is something called as a random state. I'll tell you random state afterwards. After this, what I did till this point, I hope everybody is understanding what exactly the train test split is doing. Fine. Then let's move to, we are now passing, अब हमारे पास arguments आ चुके हैं मॉडल को क्रिएट करने के लिए. Now we are calling the model. मॉडल क्या था हमारा, what is the model that we are working for? Linear regression. So it is linear regression. Now there is a bracket class, so I am not passing any amount of argument for the linear regression. So अगर तुम ध्यान से देखोगे, for this linear regression it simply says fit intercept true, normalize false, copy x true, n jobs none. So I'll tell you what exactly this n job does. Last class में मैंने बताया था n jobs का मतलब क्या होता है, how many processors you are using. I hope so dual core, quad core. So if I'll say -1, that means it will be executing using all the cores, all the processors. If I'm using it to be 1, that means it is only using 1 core. If I'm using it 2, that means it is using only 2 cores. Fine class. तो जब हम बहुत बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो हमें ये n jobs डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है.
नॉर्मलाइज इज फॉल्स. नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? क्योंकि डेटा के अंदर बहुत स्पार्सिटी होती है. आई होप मैंने क्लास बहुत बार बताया है कि आई हैव समथिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और आई कैन सिंपली हैव -1 से लेके +1 तक. कैन एनीवन डिफाइन हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर फ्रॉम -1 टू +1? Anyone class? How many? Roughly. Infinitely Many का many. कितना? Define it. Infinitely many. That means I start from -1 से शुरू करती हूँ तो -0.0000000. I don't know how much times. So now starting with decimal के बाद इतनी वैल्यूज के लिए मुझे काम करना पड़ेगा. So it is having the infinite value. So undoubtedly मेरे मॉडल को ट्रेन कराने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. From having -1 to +1. So I have to make sure that my column values should be having some values. कुछ इस तरीके से values आ जाए that my final response should come like normal distribution. लेकिन क्योंकि normal distribution proper नहीं आ पाता तो we have to go for normalization. Despite the fact अगर हम इसे remove भी करते हैं कुछ values को तो भी हमें normalize करना पड़ता है. Normalize करने का मतलब क्या हुआ? Now we are having limiting our values within a range. So if I am using something called as, let me work on another file. If I'll use something called as standard scalar, बेटा ये क्या काम करेगा? ये मीन को करने की कोशिश करेगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन को करने की कोशिश करेगा 1. सो इसकी जो वैल्यूज होंगी दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1. दैट मींस इफ आई से standard scalar x1, so what it will do, it will transform all the values of x1 within 0 to 1. Is it okay? समझ में आ गया? अब 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट द मैक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिटेशन हम लोगों ने उस पर डाल दी है. क्लियर हुआ क्लास? इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then there is something called as min max scalar. What it will do, it will define whole of the data set between -1 and +1. So what I'll do, min max scalar x1, so it will define all the values between -1 to +1. So basically करता क्या है ये? मिनिमम वैल्यू लेता है, मैक्सिमम वैल्यू लेता है, प्लस माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है. इज इट ओके? हमें ये काम करना जरूरी कब होता है? जब हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज पर काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं. तो मैंने यहाँ पर अब आर्ग्यूमेंट में कुछ पास ऑन नहीं किया. नॉर्मली हम लोग पास ऑन नहीं करते जब तक हम ट्यूनिंग नहीं करते, बिकॉज द डेटा सेट इज वेरी लो, देयर इज हार्डली एनी नल वैल्यूज, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ओवरफिटेड भी नहीं होगा, ये हमें दिख रहा है. सो लेट्स टॉक अबाउट. सो आई डिफाइंड द वेरिएबल LR, and in LR I called a function called as linear regression, which is nothing but the model. Then I have to fit the model. I hope सबको याद होगा, मैंने एक दिन बोला था if I have a dress and I have to fit a data point, datas. मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, कुछ ऐसा. आई होप क्लास याद होगा. और मैंने कहा था मुझे अगर ये सारा का सारा इसके अंदर फिट करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? द डायमेंशन ऑफ दिस बॉक्स शुड बी मैच टू व्हाटएवर आई हैव टू फिट इन. गेटिंग माय पॉइंट? सो मैंने जो अपने x को और y को स्प्लिट किया है, x train and y train को जो स्प्लिट किया है, नाउ आई हैव टू फिट दिस इनटू सम मॉडल. मॉडल क्या है मेरा? मुझे इसे फिट करना है किसमें? मॉडल पैरामीटर्स में. मॉडल क्या है मेरा? LR, that is linear regression. So what we are doing, we are simply saying LR dot fit x train and y train. So basically it is fitting the arguments in the model. After that what we have to go for, we have to simply ask for, अब फिटिंग तो हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम फिट कर लेते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये भी चेक करना होगा ना कि प्रेडिक्ट करा पाएगा या नहीं करा पाएगा. तो प्रेडिक्ट किसके लिए कराएंगे हम लोग? टेस्ट के लिए. So what we'll do, we'll simply call a function called as predict. So LR dot predict, that means जो fit हो चुका है उसमें
प्रिडिक्ट कराना है किसको, कौन से आर्ग्यूमेंट को, एक्स टेस्ट को. एम आई क्लियर क्लास? एम आई क्लियर दिस पॉइंट? Yes, तो हमने क्या करा, ट्रेनिंग सेट को हमने फिट कराया और टेस्ट सेट को हमने प्रिडिक्ट कराया. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, ट्रेनिंग को हमेशा फिट किया जाता है और टेस्टिंग के लिए हमेशा टेस्ट सेट को कॉल किया जाता है. तो यहाँ पर हमने एक्स टेस्ट को कॉल किया है. क्लियर है टिल दिस पॉइंट? सो लेट्स सी. I'll call this. There's सबको values. Now these are the values that are coming out. Fine. So I'll start running from this point and I'll show you exactly कैसा आ रहा है. So we are having this value. दिख रहा है क्लास? तो अगर मैं Yes, ma'am. यहाँ पर एक और चीज दिखा देती हूँ, मैं और क्लियर हो जाएगा. I'll call x and I'll call y also. So if I'll run it, the values of sepal length यहाँ पर, sorry, यहाँ पर मैंने sepal length कॉल करा. तो I have all these values of sepal width, petal length and petal width. तो तीन को मैंने सिर्फ sepal length को ड्रॉप कर दिया, बाकी तीनों कॉलम्स मेरे पास है. We have y as sepal length, which is basically the output. So now let's see y की वैल्यू क्या आ रही है. हाँ जी क्लास, so दिख रहा है सबको? It is coming out in an array form. It is 3.5, 3, 3.2. After this what we did, हमने कहा कि हमने टेस्ट वाले को भेजा and we are having the prediction value like this. I can do one more thing. Let's check it out. I'll define my x test 1 with another set of frame. So class, let's see. Let's take it out. It's 2.5, it's 5.0 and it's 1.9. Okay. I'll take this value और class label is indexing is 146. 146 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 आ रही है क्लास? सबको दिख रहा है ये वाली वैल्यू? So this is basically the serial number. मैम इसमें सेपल विड्थ ही है y. मैम वो सेपल विड्थ की वैल्यू है, सेपल लेंथ की नहीं है. No बेटा, it is sepal width now. So, अच्छा एक मिनट, I have to rerun it. Is it okay now? Yes, ma'am. Right? So class, now I have sepal width, petal length and petal width. Let's go with indexing number 146, which simply says sepal width is 2.5, petal length is 5.0 and petal width is 1.9. And इसकी corresponding sepal length की जो value आ रही है, that is coming out to be 6.3. So let's check it out exactly it is predicting right or wrong. So what I'll do, I'll simply take this value, I'll put it in my another testing set, that is this. मैंने xtest1 एक नया वेरिएबल बनाया, मैंने उसमें ये वैल्यूज डाली and what I'll do, I'll simply call this. I'll take this and I'll call this. But now my test set will be xtest1. प्रेडिक्शन किसके लिए होगी? xtest1 के लिए होगी और मैं इस स्प्रेड को भी नया नाम दे देती हूँ spread1, so that I can visualize कि exactly क्या हो रहा है. So now there is a testing हो गई. Now there is testing going on. What it is saying? कौन बताएगा मुझे? एरर क्या है? क्या कह रहा है ये? That you have to reshape it. तो अब क्या करूं? इसे रीशेप क्यों करना है मुझे, जब मैं यहाँ पर ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ? तो why I have to reshape? कौन बताएगा मुझे? बहुत आसान है, कौन बताएगा? Tables change कर दिए. लेबल चेंज कर दिए इसलिए या समथिंग एल्स?
it says it's a list object. What should I do now? सोचो सोचो. I need to know. क्या करूं? It says list object has no attribute. Okay. Now again it is not accepting. क्या किया जाए class? कोई तो बताओ. 3 practical सबने करा है. It's creating a problem. What should I do now? Yes, first years, please let me know how should I go about it. अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं homework दे दूंगी. You have to do it. What I want this value to be taken as test, and I want this to be passed over here, and then finally it should be predicted. Or let me take this. Now it says predict x test 1 में problem है. It says there has to be, it is an array which requires to be reshaped. So I don't know what exactly is the problem. You people have to identify it and solve it. मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंडीशन दी है. What it is that I need the prediction for this particular value which is coming out to be equal to, output should come out to be equal to 6.3 as per the model. I don't know, there is some error is going on. I don't know what. You people have to identify it and let me know. Can I do it like this? But serious, I am not getting the point whether you people are listening to me or not. So, as it is coming out something. First years. So, problem क्या थी यहाँ पर? कौन बताएगा मुझे? Why it is asking for reshaping? I can tell you. Not array. No, something else. It's related to something called as x and y. As what is if I'll define something like this: 1, 2, 3. What we mean by this? What do we mean by this? X is a list which contains 3 elements. X is a list which contains 3 elements. That means I'll simply say like this. Yes, ma'am. But now I have a data set like it is x1, this is x2. Now what should I do? Okay, so if x is a list, it is 1-dimensional or 2-dimensional? 1-dimensional. Exactly. So 1-dimensional के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? लेकिन अगर मुझे 2-dimensional में कोई डेटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सब लिस्ट बना के. सब लिस्ट बना के. बहुत और कैसे बनाओ सब लिस्ट? एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट डालकर. कैसे बनाओ? So I should write it as 1, 2 and 3. And again another one like this. Yes, ma'am. Like this. Make it int. Kanchan, wo to int will be the basically data types. Now, like this, should I make it like this? That means I should write it as x is equal to 1, 2, 3, then 2, 3, 4. Like this. हाँ जी, ये तो नहीं बन पाएगा. It will create an error. It will say कि exactly बना क्या रहे हो? List and array both are mixing into it. फूडी क्या होता है बेटा? कौन बताएगा 2-dimensional का मतलब क्या होता है?
First years, please. What is two-dimensional? Ma'am, without volume in case of Simply, it like is L and having B, only two, axis to Ma'am, two it's a axis. axes. X plane, and Y. 2 dimensions. Like, Fine. So no matter how many x1, x2, and x3 are there, I have another variable as y. Getting my point? In our data set, what we did, we defined x and y. Yes or no? We defined x in terms of features and y in terms of labels. But is it a 1D array or 2D array? It's a 2D array. So undoubtedly, can I write my 1D? I have to, if there is a 1D, then it has to be in single bracket. But if I have 2D, then it has to be like this. इसमें Yes, ma'am. first bracket will be showing you the first row or column, followed by second bracket, which is actually giving you the second values, and then crossing it like this. If I need third, then it will be like this. अगर मेरे को 3 dimensional बनाना है, then it is like this. Getting my point, class? Now the values were x1, x2, and x3. Output is y. It is a 2 dimensional, and we have just passing it on as a 1 dimensional. So automatically वो क्या कहेगा? वो कहेगा there is an error. Reshape it. क्यों? क्योंकि तुम 2 dimensional का मॉडल क्रिएट कर रहे हो और 1 dimensional का आउटपुट तुम लेकर आ रहे हो. So there is a problem. Getting my point? तो इसलिए उसने क्या कहा? रीशेप करो. तो रीशेप करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे उसे 2 dimensional को लेकर आना पड़ा. So now it is 2 dimensional. Fine. After this I passed on x test 1. पास करने के बाद मैंने प्रेडिक्ट कराया. Now the prediction value is coming out to be, हाँ जी क्लास, prediction value is coming out to be 2.5. और आनी कितनी चाहिए थी? 146 वैल्यू की वैल्यू कितनी आनी थी? 6.3 and we are getting a value of 2.5. Is it the right value or the wrong value? value. No, If ma'am. it is a wrong value, is our model predicting the right thing? No, ma'am. Fine. No. So let's check it out. How we are saying it is not performing well. पहले तो हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिल गया. अभी तो रिस्पॉन्स का सेट तो मैंने बीच में इन बिटवीन डाल दिया. नहीं तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं? हम सीधा मॉडल परफॉर्मेंस पे जाते हैं. मॉडल परफॉर्मेंस में वी हैव 3 थिंग्स: मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, जो मैं कल की क्लास में कराने वाली हूँ, and basically absolute error, squared error, and the root squared error. So undoubtedly what we are calculating, we are actually calculating y actual minus y predict in the first case, which is basically your just MSC, mean square error निकाला हम लोगों ने. Now when I am calculating root mean square error, then what will it happen? It will be taking of this. Divided by y actual. Divided by y actual. So now let's see what exactly the value is coming out to be. Y test को predicted value के साथ compare कराया तो absolute error आया, which is coming out to be 3.108 into 10 raised to power minus 16. Is it right or wrong? हाँ जी, error ज्यादा है या कम है? First years actual value कुछ आई थी, predicted values निकाला पूरे डेटा सेट का और उसके बाद एरर निकाला. वो जो एरर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 into 10 raised to power minus 16. Is it a good performance matrix or a bad performance matrix?
Sorry class, मेरा connection lose हो गया था. Is my screen visible to everyone class? No, ma'am. Okay. I'm really sorry. मेरा एक बार और इंटरनेट मेरा शायद lose out हो, but let's see. Okay class, who will tell me? What is 1 into 10 raised to power minus 1? 0.1. 0.1. Yes, first years? It is 0.1. 0.1. Okay, it is 0.1. 0.1. What is 1 into 10 raised to power minus 5? What is this? 0.00001. 1. Is it smaller than this value? Yes, ma'am. Which one is smaller from these two values? More negative value. Which one? Second one. Second. More. minus Okay, 5. then what is this? This is ये वाली more value क्या हो smaller. जाएगी? More small. More smaller. So over here, if I say y actual minus y predict upon me, y actual is coming out to be 3 into 10 raised to power minus 16. Is it a good Error performance? is small. Error is very small. Getting my point? So over here, it simply says absolute error between the y test and y prediction. So y prediction was for this one. ये वाला जो prediction आ रहा है. Y test and Y prediction के बीच में जो error आ रहा है, that is coming out to be 3.108 into 10 raised to power minus 16. Is it small or large? Yes, class. 3.108 into 10 raised to power minus 16. Is this a small value or a larger value? Small value. It is a smaller value. So your absolute error is very small. If I'll calculate the squared error of this, it is coming out to be 1.9 into 10 raised to power minus 31. Is it very small or very large? Very small. It is again very small. That means prediction के साथ it is not having any kind of issue. Okay. After this, if I'll calculate the root squared error of this y test and predict, it is coming out to be 4.36 into 10 raised to power minus 16. Is it coming out to be a small value or large value? Hanji class, is it coming out to be small or a large value? This one. Small value. It's again a small value. That means model performance for is calculated by the absolute error, that is MAE. MSE is basically the squared error. Then the root mean square error is basically coming out to be, these three values are actually giving the performance of the model, and it is coming out to be very small. That means for three variables predicting the one value as the output, the performance is really good because the error is coming out to be very small. Yes or no? Yes, ma'am. So undoubtedly, when we tested x test 1 for our variable, it is giving us a wrong value. That means might be 99% of the accuracy is very high. Right? But maybe 1% of the data points are actually giving you the wrong amount of information. Fine, class? So since the error is very low, we can simply say that the model performance is really good. We'll also calculate the accuracy. Accuracy भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ. After this, अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया? हमने bifurcation किया. Now we are not doing the bifurcation of the variables. We are taking the whole data set all together. That means we take all values. Okay, so over here, I'll get the result and I'll check it out. What exactly the value is coming out to the prediction one. So over here, what I did randomly, मैंने अपने values check out की. Sepal length for ID number 6. It is coming out to be 4.6 for sepal length. Sepal width is coming out to be 3.4. Petal length is coming out to be 1.4. Petal width is coming out to be 3.4. After this, मैंने अपने मॉडल के अंदर उसे प्रेडिक्ट कराने के लिए बोला. तो अनडाउटेडली उसने क्या प्रेडिक्ट कराया? उसने सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के लिए
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करी. सो जब कैलकुलेट करा तो इट गेट आउट टू बी द वैल्यू ऑफ predicted one is coming out to be 4.2. Actual one is coming out to be 4.6. Variation दिख रहा है क्लास? तो predicted sepal length is the prediction जो मॉडल ने निकाला है. It is coming out to be 4.2. लेकिन actual कितनी थी? 4.6. तो error कितना हुआ क्लास? Error will be calculated as 0.6 0.6 minus 4.2, which one the predicted one, divided by this. So it is coming out to be 0.4 divided by 4.6 is how much class? कितना आ रहा है? 4 divided by 46, that is equal to 2 divided by 23. फटाफट बता दो. 0.08669. Multiplied by 100 is how much? 0.08.69. So this much amount of percent error is there. So getting my point, how we actually calculate the percent error or the absolute error? Clear हो गया? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए निकाला था. अगर मैं इसको चेंज करके डाल देती हूँ, let's go for 146 के लिए हम लोगों ने निकाला था अभी. Let's check it out. 146, the value is coming out to be this. Let's predict it. Yes, ma'am. So it is coming out again. Ma'am, 0 है. Sorry, इसको predicted वाले को मैं change कर देती हूँ. It is coming out to be 6.3. 3. Now let's check it out. Ma'am, predict वाले में भी change क्या होगा. करूँ? क्या करूँ? Predicted sepal length वाले में हाँ, तो क्या change करूँ यहाँ पर? 146. यहाँ पर 146 करूँ पक्का? Or shall I go with 145 or 146? Let's see. Getting my point? Prediction के लिए हम क्या कह रहे हैं? We are just going with. अच्छा, 0.33% की वजह से. हाँ, exactly. टेस्ट तो वही है ना, एक्स टेस्ट की बात कर रहे हो. उसने तो एक्स टेस्ट कुछ भी लिया होगा, तो हमने यहाँ पर 146 दे दिया है. So now I am just saying, okay, fine. Let's go with 3. और prediction बता दो इसकी क्या हो सकती है. So it is giving me 2.99. वो 30. Okay. I know कहाँ पर error, कहाँ पर confusion हो रही है. आज हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन किया था इससे. These were 120 values. Okay. 146 नंबर का, सीरियल नंबर का या इंडेक्स का जो भी डेटा था, we don't know whether this belongs to this or it belongs to Test set. exactly. वो प्रॉब्लम समझ में आ गई बेटा? जो 146 Yes, नंबर ma'am. का डेटा होगा, सपोज वो ट्रेनिंग को बिलोंग करता है. जब हमने इस 146 नंबर का डेटा फिर से दिया, तो वो कहां पर मैच करेगा? वो तो यहाँ मैच करेगा ना. गेटिंग माय पॉइंट? वो यहाँ से कैलकुलेट करेगा. जब वो यहाँ से कैलकुलेट करेगा, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो वाई टेस्ट की वैल्यू आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी. क्लियर हुआ? तो वो 30 डेटा पॉइंट से निकाल रहा है rather than 120 डेटा पॉइंट. Here अब 120 data points are random. So now here comes the working of random generator. ये random generator क्या कर रहा है? Randomly values को split कर रहा है between main and test. So ऐसा नहीं है कि first 120 values will be for training and remaining values are for testing. ये randomly ले रहा है. अब वो randomly कुछ भी हो सकता है. हो सकता है ट्रेन में उसने लिया हो 0, 1, 3, 8, 10, 60 and so on. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, 4, 5, 6, 7 and so on. Getting my point? Is it okay class? यहाँ पर random generator का काम यहाँ पर ये है. Now let's go ahead. So now we are taking again the same thing. What we are doing now, we are defining our data set to be the complete one. मैंने DF1 में सारा का सारा features डाला. After this,
I'll run it. I'll get DF2. So now I have again the values in terms of 0, 1 and 2 because now it is a continuous value problem. I'll split it. मैं random state अभी थोड़ी देर के लिए 1 दे देती हूँ. I'll split it again. I'll make it to be default value. Now I am passing on the complete data set. I'll call the linear regression first. Then I'll fit the values. Then I test it. जो भी 30% डेटा 30 वैल्यूज डेटा सेट में रहा होगा वो टेस्टिंग के लिए जाएगा and we'll check it out what exactly the information we are getting. So class, what we are getting right now is the error coming out to be the perfect one or it is coming out to be the different one? Error कम है या ज्यादा है? कम है. कम है. Getting my point? Now the error is different. So let's go with I'll call another factor over here just to check it out exactly क्या prediction सही आ रही है या नहीं आ रही है. So I'll give it over here. So now it is not DF1, it will be DF2. I'll call it. So it is showing me some error. Okay, iris. बिकॉज हम लोगों ने डेटा फ्रेम क्या सेव किया हुआ है इसे df2 ना, तो df2 को हमने यहाँ पे कॉल किया df2 log dot log 146. The values are this. Class iris 2 type 2. What we mean by this? 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन से लेबल को रिप्रेजेंट करेगा? सिप्टोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका. वर्जिनिका. Okay. So now after this, I'll call my function exactly ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वैल्यू दिखाएगा I don't know. So we have to go for control V. I'll pass my x test 1. Let this value be my x test 1. I'll run it again. Okay, now I'll x underscore test 1. मैंने इसे print कराया. I got the value to be iris data type as 2. So over here I'll change it. Iris underscore type. And over here also actual value क्या थी हमारी? It is 2. So now over here it is actually 2.2.0. I'll predict it. So now it is saying showing some error. Okay. Sorry. So this value is this, and we called it over this only. Class, what it is coming out to be? Predicted value is coming out to be minus 1.3 into 10 raised to power minus 19. कौन सी वैल्यू होगी ये? नेगेटिव. बेटा predicted type. Now the type is there. Now we are passing on all the values. Now we have x1, x2, x3 and x4 as features. So x के अंदर क्या जा रहा है? Sepal length, sepal width, petal length and petal width. और y के अंदर क्या जा रहा है? Iris type. That is 0, 1 and 2. तो अब यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है? कौन बताएगा मुझे? बहुत आसान है. Actual type is 2. That is basically the versicolor. Virginica, sorry. And value जो आ रही है that is coming out to be minus 1.3 into 10 raised to power minus 16. That is equal to 0. exactly. Now it is coming out to be 0.
क्लियर हुआ? आउटपुट क्या आना चाहिए था? 2 और आ क्या रहा है? 0. इसका मतलब बाय सम रीजन इट इज मिसक्लासिफाइंग versicolor और वर्जिनिका विद सिटोसा. और अगर तुम ध्यान से देखोगे अपने पेयर प्लॉट में या फिर प्लॉट ही दिखाती हूँ. सो क्लास दिख रहा है यहाँ पर? कॉमन है। पीक तो कॉमन है एंड एट द सेम टाइम आई होप सबको दिख रहा होगा. ये एक पॉइंट एक लेबल इट इज वेरी स्पार्सली प्रेजेंटेड. दिख रहा है? Yes, ma'am. It belongs to setosa, but it is very closer to the virginica or versicolor. Might be that point is this. Same goes over here also. This point is very closer to these two categories rather than setosa category. आना क्या था? versicolor या virginica. लेकिन आया क्या? setosa. Fine. So there could be a possible condition that there is a misclassification. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इन दोनों में से पेटल लेंथ और पेटल विड्थ में से किसी एक को ड्रॉप कर देते तो आई थिंक क्लासेस आर वेल डिफाइंड. दिख रहा है सबको? सिटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका. Similarly, setosa, versicolor, virginica. But over here, they are misclassified. So that's the only thing. The error is coming out to be less, but the prediction is coming out to be the false one. So misclassification is there. So now what we have to go for? We have to tune it. So tune करने की technique को हम क्या कहते हैं? We have to tune the parameter that is basically called as hyper parameter tuning. Right? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. But we are not going for hyperparameter tuning for this particular data set as well as for your course also, because hyperparameter tuning requires n number of features and more of data set. And जो ट्यूनिंग हमें लीनियर रिग्रेशन में करनी होती है वो ट्यूनिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं होती बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट मॉडल. बहुत इजी मॉडल है. वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट आर ax plus b. We have to just calculate a and b. अगर मुझे कुछ ट्यून करना भी है तो मैं किसको ट्यून करने की कोशिश करूंगी? या तो मैं a को ट्यून करूंगी या फिर मैं b को ट्यून करूंगी. सो दैट्स द ओनली थिंग. बट फिर उसको ट्यून करने के लिए वी डोंट हैव मच पैरामीटर्स कि इसको ट्यूनिंग में हेल्प कर सके. आई होप मैंने अभी दिखाया था लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिखाया था सबको मैंने. अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे पैरामीटर्स आर फिट इंटरसेप्ट, दैट इज ट्रू. नॉर्मलाइज फॉल्स, copy x true, n jobs positive false. So there is no parameter that is actually required to tune this model. इसकी परफॉर्मेंस को और बेटर किया जाए वो हमें नहीं मिल रहा है. सो अनडाउटेडली व्हाट वी आर गोइंग फॉर दिस मॉडल, फिर हम इसको ट्यून नहीं कर सकते. सो दैट्स द ओनली रीजन. हाइपर पैरामीटर इस लीनियर मॉडल के लिए स्टडी करने का कोई लॉजिक नहीं है. क्लियर हुआ क्लास? Till this point it is clear to everyone? Yes, ma'am. So what I want from you people is you have to create this problem. What I mean iris data set को call करोगे, you will calculate the performance metrics. मैंने सब कुछ भेजा हुआ है. I want one thing from you people now. मैंने accuracy add नहीं करी है. I want कि accuracy और निकाली जाए. How we have to calculate the accuracy of the linear regression model? There is a command. लोग आइडेंटिफाई करके बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में. मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे विल गो फॉर द प्रैक्टिकल. So in that class, I want you people to kindly let me know what is the command to calculate the accuracy of any kind of model. There is only one statement. जैसे mean square error के लिए लिखा गया ना, ऐसे accuracy के लिए लिखा जाता है. एक लाइब्रेरी फंक्शन और कॉल करना पड़ता है sklearn से. Clear है class? Can you people do that? Model on this particular data set, but not using only x1,
There are 7 features, take whole of the data set. Features में क्या क्या है? X1, X2, X3 till X7 and there is one Y label जिसमें क्या define करा जा रहा है? Whether the person is suffering from diabetes or not diabetes. So basically 0 or 1 defined as 0 for no diabetes, 1 is defined for diabetes. What I want from you people is you people have to just make a linear regression model for this complete data set. And what I want, I don't need all the errors. I just need only one MSC error, and second one is called as accuracy. Can you people do that? Can you people do that, class? Yes, बहुत ma'am. आसान है. क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ पहले लोड करना है डेटा सेट. लोड करने के बाद you have to identify the head, shape, go for null values. If there are null values, drop them, create the final data set, that is the data frame in the terms. After this, what you people have to go for? You have to go for Train test split. exactly train test split. Then you have to call the model linear regression, that is LR बना करके linear regression model call करोगे. मॉडल को फिट करोगे by x and y. After this Reshape. टेस्टिंग करोगे एंड देन फाइनली प्रेडिक्ट करोगे. टेस्ट और प्रेडिक्ट आ जाएगा तो एमएससी कैसे निकाला जाएगा? इट विल बी बिटवीन y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा predict. Similarly, accuracy is also being taken by this only. अब accuracy के लिए कमांड आती है, वो तुम लिख के आओगे, मैं नहीं लिख के आऊंगी. So these are the steps that you people have to follow. यहाँ तक सब आराम से करेंगे. ये सिंटेक्स सारे मॉडल्स के लिए कॉमन है. फाइन क्लास? Yes, ma'am. हो जाएगा? Yes, ma'am. So can I expect this on Monday? Okay, let me do one thing. मैं अभी एक एल्गोरिथम और कराने जा रही हूँ. I'll share this diabetes वाला data set on the classroom. By Tuesday को will perform जो मॉडल अभी कर रही हूँ वो और लीनियर रिग्रेशन. जो लोग पहले करके आ जाएंगे इट्स गुड फॉर देम. जो नहीं करके आएंगे वो उसी टाइम पे परफॉर्म करेंगे so that we can move to another algorithm. Is it okay? Is it okay, class? Fine. So I'll go with another algorithm today. That is basically और ये सबने किया हुआ है और मैं इसको कराने के लिए रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करूंगी. रिवर्स टेक्नोलॉजी का मतलब रिवर्स मोड पे काम करूंगी. फर्स्ट आई विल गो विद द न्यूमेरिकल, then I'll tell you what exactly the practical is and then I'll let you know the theory, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे को theory बहुत आसानी से समझ में आएगा. In class, so let me go with this. Who will read the question first? कौन पढ़ेगा? टॉपिक क्या है और क्या बोला जा रहा है? Let me ask. तुम नहीं तो सो जाओगे सर. So is Bhavna there? Bhavna? Bhavna Moga, are you there, beta? Okay, Bhavna. Okay, she left the meeting. Fine. Let me check. Juhi? नहीं, जिज्ञासा. Jigyasa, are you there, beta? Yes, you are there. Okay, Jigyasa, can you please read the statement? Determine the parameter k equals to number of nearest neighbor. Then Jigyasa, read all the 5 points. Calculate the distance between the query instance and all the training samples. Sort the distance and determine nearest neighbors based on the kth minimum distance. Gather the category Y of the nearest neighbor. Use simple majority of the category of nearest neighbor as the prediction value of the
query instances. Okay. So I don't know how many you actually read the pointers, but the thing is, it is being asked. Let's go with this. K nearest neighbor. किसने पढ़ा है KNN? नाम सुना है सबने? यस मैम, थोड़ा पता है। ओके. किसी ने ये पढ़ा है? सबने पढ़ा है. यूक्लिडियन डिस्टेंस. Yes or no? यस मैम। Can anyone let me know what is Euclidean distance? बताएगा मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? अंडररूट x2 minus x1 square whole square into y2 minus y1 का square. Okay. So let's Under root. under root. Exactly. Um, seven. Why 7? So I have 7 points. कौन बताएगा कौन सा पॉइंट इसके पास ज्यादा क्लोजर है? Which point is very closer to the one which by looking at it? Let this point be A, B, C, D, E, F, G. Which point is much closer to each other? D. C. X to Y to X to Y to D. D is closer to which one? C. 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 Okay. So someone is saying D is closer to C. Anyone else? And Anyone A is else? closer to B. A is closer to B. Anyone else? G is closer to F. G is closer to F. G is closer to F. Anyone else? Similarly, E is closer to F. E is closer to F. Okay. So who said D is closer to C? किसने बोला था D is closer to C? नाम बता दो बेटा. मैम नियति. नियति ने बोला था. Okay. So नियति said D is closer to C. नियति कैसे पता चला बेटा? मैम जर्नलाइज करके सबसे ऐसे compare generalize steps that you followed for generalization. First I took one point, this is C, and then I compared its distance with other points. Exactly. Okay. Who said A is closer to B? Niyati. Again Niyati. Okay. Anyone else? G is closer to F. Who said? Vandana. So Vandana. कैसे बेटा? कैसे लॉजिक लगाया? हम टुक मतलब F को चूज किया और उससे क्लोज तो मतलब 2 पॉइंट्स थे, एक तो E और G. The difference between F and G देखने से लग रहा है कि F और G में Exactly. So can I say that at a go जब तुमको बोला गया कि okay which one is much more closer, तो तुमने सारे के सारे 7 points को identify किया, हर किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करी, लेकिन जो सबसे कि तुम्हारे हिसाब से ये तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, what you did actually you compared it. Can I say that? सबसे पहले तुमने कंपैरिजन किया between two points. Yes or no? For example, let me take a better one. I compared this one with this. इन दोनों के बीच का distance कितना है? Okay. Then I said, okay, fine, let's go with this. ये बहुत ज्यादा है. So definitely A तो D के साथ नहीं है, लेकिन A B के साथ है. A C के साथ है. Yes, A C के साथ नहीं हो सकता क्योंकि B comparatively smaller है. ऐसा ही कुछ किया था. Similarly, D की बात करते हैं now. C is closer to D as well. C is closer to B, but comparatively C is much closer to B. So I can simply say that C is closer to B also. Then again I switch to this. E
and G. I also switch to another factor, which is simply this one, or this one, or this one. Getting my point, class? So what we are doing, we are actually taking one favoritism, that means एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया और उसको हमने सारे पॉइंटर्स के साथ कंपेयर कराया, जिसके साथ उसका सबसे कम डिस्टेंस आया, हमने उसको बोल दिया कि वो उस स्पेसिफिक वैल्यू को ही वो उसका इमीडिएट नेबर है. कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? Yes, ma'am. सिमिलरली अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए जो है जी से, ए जो है एफ से बहुत फार ऑफ है, तो आई कैन सिंपली से दैट डी इज द इमीडिएट नेबर बट जी एंड एफ आर नॉट नेबर्स. इसको इस तरीके से लेके चलते हैं. सो के मीन्स एल्गोरिथम, के मीन्स के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के अंदर के इज अ फैक्टर दैट डिफाइंस हाउ मेनी नेबर्स यू वांट. How many neighbors you want? K is the number. So K is actually a variable. इसमें हम एक नंबर डाल रहे हैं. अब नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हुआ? जो हमने K को डिफाइन किया है उसमें कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उस पर्टिकुलर पॉइंटर के लिए नेबर की तरह काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड ओके आई हैव अ वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? K इक्वल टू 2 का K equal to 2 is the number of neighbors that are meant for a particular point. That means now K equal to का मतलब क्या हुआ? A point से ऐसे 2 points निकालने हैं जो उसके immediate neighbor हो सकते हैं, और वो कितने होने चाहिए? वो कितने होने चाहिए? Yes, first years. How many? Anji. It will be 2. Why 2? Because we had defined our K to be equal to 2. So maximum. So out of all the 7, best 2 will be identified as the Neighbors. This is what exactly the funda has been taken by the machine learning algorithm, जो कि तुम्हारे साथ भी होता है. तो एक जगह पे रहते हो. Suppose I live in society. It's not suppose, I live in a society. तो मेरे immediate neighbor कितने हो सकते हैं? अगर मेरे एक फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स हैं, मेरे पूरे आई हैव 3 फ्लोर्स, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. मेरा फ्लोर है, माय फ्लोर इज ग्राउंड. ग्राउंड में देयर आर 4 मोर अपार्टमेंट्स. कितने नेबर्स मेरे होंगे? So I live at a ground floor. This is my house. This is my first neighbor. This is my second neighbor. This is my third neighbor, and this is my fourth neighbor. So how many neighbors would be there for me? 4. Now there are 4 neighbors. Out of 4, which one is much more closest neighbor or nearest neighbor? 2 and 4. It's 2 and 4. Why 2 and 4? Because they are the immediate one. जो बिल्कुल निकलते साथ ही जो मेरे सामने जो साथ में घर पड़ता है या मेरे सामने जो घर पड़ता है वो बिल्कुल immediate neighbors होंगे. That doesn't mean that 3 and 4 are not called as neighbor. Yes, they are called as neighbor, but they are not the immediate one or the nearest neighbor नहीं है वो. Getting my point? So this actually is the real life example that has been incorporated in the algorithm that is called as a K nearest neighbor. So K nearest neighbor के लिए हमको बोला जा रहा है कि what we have to go for, we have to identify a parameter K which is basically the K nearest neighbor. That means मेरे पास values तो है, I have to identify which one is called as the closest neighbor, nearest neighbor. तो पहली तो चीज मुझे ये डिफाइन करनी है. सेकंड क्या कहता है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्वेरी इंस्टेंस. दैट मीन्स जो तुम्हें क्वेश्चन में इंस्टेंस दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई
what exactly the K is for the training sample. So if I'll say I have 5 neighbors, मैं अपने लिए एक closest neighbor identify कर रही हूँ, तो I will be called as the query instance. Remaining 4 will be called as the training samples. So I'll compare the distance from all the 4 neighbors and which one is the minimum one I'll find accordingly as the neighbor. This is in the second point. Third point says that sort the distance and determine the nearest neighbor based on the kth minimum distance. That means what I have to go for? जहां मैंने निकाला मेरे को उसकी सॉर्टिंग करनी है. सॉर्टिंग किस तरीके से करूंगी? जिसका सबसे कम आएगा उसको टॉप पे रखूंगी और जिसका सबसे मैक्सिमम आएगा उसको सबसे लास्ट में रखूंगी. So I'll do the sorting and then I'll define which one is the nearest neighbor as per the kth value. अगर मैंने कहा कि first two, I mean k की value 2 है तो first two निकालूंगी. k after that it says gather the category of y. Gather the category of y of the nearest neighbor. That means whether that particular incident will fall or not for that particular neighbor. मुझे ये निकालना है in the terms of label. After this, there is something called a simple majority. ये भी जब solve करेंगे तो साथ साथ पता चल जाएगा. So let's see what exactly we have to go for. So these are the steps. First 5 are the steps. Basically, these are the steps to perform to use for the k nearest neighbor. Now, what exactly the question says? First of all, just mark this table in your copies. Acid, durability, strength, and classification. Draw this table in your copies now. Drawn? We are just having only 1, 2, 3, and 4 samples. बना लिया क्लास? First years हो गया है? Yes, ma'am. Okay, now the question says we have a data from the questionnaire survey, which is basically the people opinion, which says that there are 2 attributes to check the acid durability and strength of a tissue paper, whether it is a good or a bad class. तो हमने क्या काम किया? हमारे पास कोई एक सर्वे था, उस सर्वे के अंदर 2 पैरामीटर्स थे, acid durability and second one is the strength, that will define the classification in terms of whether that tissue paper belongs to a good category or a bad category. So हम लोगों ने ये सर्वे लिया and उसमें से हम लोगों ने ये 4 data points निकाले. Now the question here says that these are the training samples. What we have to go for, if I have a value of x1 as 3 and x2 as 7, that means acid durability की अगर value 3 है और strength की value अगर 7 है, तो वो कौन सी classification में add on होगा? That means whether it will belong to bad class or it will belong to good class. We have to identify this by using KNN. Right? So how we have to go about? तो सबसे पहले तो हमें k nearest neighbor की बात करनी है. तो सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा स्टेप 1 कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप SK learn की बात करोगे, आज तो k की वैल्यू डिफॉल्टेड वैल्यू इज 5, but we have only the training value as कितने वैल्यूज है हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल? We just have 4. So undoubtedly we can go for 5. So to be on safer side, let's go with 3. Why 3? Because अगर तुम अपनी classification देखोगे तो there is 1 for good and remaining 3 are for 1 for bad, remaining 3 are for good. So we can't go for 2 nearest neighbor because there will be confusion. One time it can come as good and one time it can come as bad. तो मॉडल ट्रेन ही नहीं हुआ. मॉडल या तो गुड के पास जाएगा या फिर बैड के पास जाएगा. दोनों के पास होना जा सकता है. So इसलिए हम लोगों ने k की वैल्यू 2 ना देकर के क्या दिया है? 3. Is it okay? Yes, ma'am. After this, it says calculate the distance between the query instance and all the training samples. So training instance, query instances 3 and 7. 3 and 7. Training values are this
Now what we have to go for? We have to calculate the distance. So class, to calculate Yes, the ma'am. distance, we have Euclidean distance. There is one Hamming distance also. And there is one more distance that is basically called as, let me tell you, there is one more distance that is called as your Manhattan. Okay. So I'll tell you what exactly is the difference between Manhattan. Sorry, Manhattan. तो बेटा यूक्लिडियन में हम कैसे निकालते हैं? We have 2 points as x1, y1 and x2, y2. So for Euclidean, what we used to do is x2 minus x1 plus y2 minus y1 का square दोनों पे. Let me go with new slide. So class, for Euclidean, if I have these two data points, so for Euclidean, what I'll do, it is Euclidean distance, it will be calculated by x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. Is it okay, class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Hamming one, I don't remember right now, but Manhattan basically is nothing but absolute of x2 minus x1 plus absolute of y2 minus y1. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्जैक्टली कौन सा यूज करना चाहते हो. Manhattan कब यूज करते हैं? When we actually add some regularization in our data point. I'll tell you in the next class what we mean by regularization. At this point, what we are going for is we are calculating the distance by using the Euclidean space, Euclidean distance. Fine. So I have the values over here. So this is my instance, that is 3,7 for x1 and x2. So it is 3 and it is 7. I have been given a value of my training samples as 7, 7, 7, 4, 3, 4 and 1, 4. So for instance 1, we are going to calculate the distance with the query, that is 3 and 7. So now my x1 is 7 and sorry, x1 is my 3 and x2 is 7. Similarly, y1 is 7 and y2 is again 7. So I calculated the distance. The first one is coming out to be 7 minus 3, x2 minus x1, 7 minus 3 ka square plus, I'll tell you why I hadn't taken the under root of it. And another one is 7 minus 7 ka whole square is 0, 7 minus 7 ka whole square, which is coming out to be 16. Is it clear to everyone? I didn't took the this one. मैंने under root नहीं लिया है. Okay, class. Similarly, what I did again for this instance, I calculated from the training sample. So now my x2 is 7, x1 is 3, x2 is 4, y2 is 4, and y1 is 7. So it is 7 minus 3 ka whole square plus 4 minus 7 ka whole square, which is coming out to be 25. Then again we calculated this with the next instance, that is 3 and 4. So it will be 3 minus 3 ka whole square plus 4 minus 7 ka whole square, which is coming out to be 9. And last one, that is 1 comma 4, which is coming out to be 1 minus 3 ka square plus 4 minus 7 ka square, which is coming out to be 13. At this point, it is clear to everyone.
First years, it is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. What point states that? What we have to go for? We have to sort the distance now. As per the calculation, we have to sort. Sort in the terms of जो हमारी k values है उसके according हमें उसे sort करना है minimum से maximum पे. So this was my first instance, second, third and fourth. It was coming out to be 16, 25, 9 and 13 in comparison with this instance जो कि हमें given था. तो हमें क्या given थी k की value 3. So let's talk about which one is having the least distance. कौन से 3,4. 3,4. That means third instance is calculated with a value of 9. So can I say its rank is 1? Because it is having the minimum value. Yes, ma'am. Next, because k is 3, तो k equal to 1 के लिए तो 1 आ गया. Second rank किसको मिलनी चाहिए? जिसका distance कम होना चाहिए. किसका Second distance least. किसका कम है? 13 का. Fourth 13. instance का. Oh, the second rank is given to the fourth instance. Third rank will be given to first instance, which is having a value of 16, which is nothing but third instance, and the remaining one is the fourth one. Now, since we had defined k equal to 3, what will say that these are the values as per the ranking 1, 2 and 3. They will be included as the nearest neighbor as per k equal to 3. So this belongs to yes class, this belongs to yes class, this belongs to yes class, and this belongs to no class. But in actual, first incidence belongs to bad and remaining thing belongs to good. So I write over here itself, this is bad, this is good, this is good, this is again good. ये क्लासिफिकेशन हमें गिवन है. अब क्या करना है? गैदर करना है. किस चीज को? y के अकॉर्डिंग बात करनी है. So got my point? This was bad, this was good, this was good in the initial data frame, data set में जो given था. But as per the rank, this is coming out to be yes, despite the fact it belongs to bad class. Yes, ma'am. But the fourth one, which is not called in the neighbor because we had defined k equal to 3, so we are not defining any amount of class to it. Why? Despite the fact it is already defined in the main problem, main data set में उसको defined है, लेकिन हम उसे consider नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारा neighbor तो है ही नहीं. So now there is an issue with the third one. So let's see what exactly the output will be. We have 2 good and 1 bad. Since 2 is greater than 1, yes or no? 2 is greater than 1. 2 Yes, ma'am. neighbors are greater than 1 neighbor. We conclude that this and this belongs to which category? Bad. No. There are 2 goods and 1 bad. कौन सी category में fall करेगा? Good. Good. Exactly. It will fall in good category, not in the bad category. Clear हुआ class? So now I want you people to rework on it. So I had the data frame as 3 and 7. I want you people to let me take x1, x2 and y I am giving you. 7 7 7 4 3 4 1 4. It is 7 7 3 sorry 7 4 3 4. It is 7 4 3 4 and 1 4 and last one is 3 7. This was bad and remaining other are good. Let me change in fact. Let me go with this as bad. Because जो भी idea दूंगी तो वो automatically good category में आएगा. Now I want x1 as 2 and x2 as 5. इस category के लिए ये nearest neighbor से solve करके मुझे बताओ कि ये कौन सी category में fall करेगा. Good,
or bad? Ma'am, we decided neighbors on the basis of Rank. number of data points. Rank. Rank. Oh. No, K. It's your will. You identify what exactly K you want to have. See, in the initial case when we were having only 4 data points, it is very difficult to take 2 because 3 Hmm. categories belongs to good class and 1 category belongs to bad class. So undoubtedly, whatever data point, if I'll give over here 2 and 5, undoubtedly it will fall in good category because majority are with good. Yes, Fine. ma'am. So minimum Yes, ma'am. neighbor should be 5. हमारी k की वैल्यू 5 होनी चाहिए, but since we are having only data point as 5, so we can't go for 5 values. So 5, the easiest way is to have k equal to 3. 3. ठीक है ना? अब k equal to 3 लेके चलते हैं and just identify for which classification value it belongs to. x1 is equal to 2 and x2 is equal to 5. पूरी क्लास को करना है ये न्यूमेरिकल. I don't want only 2 or 3 people to answer. और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं ना, अनडाउटेडली बेटा एग्जाम तो सभी का होना है. So it will create a problem for you people. अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है then there is no problem. Practically तभी सॉल्व कर सकते हो. So take your k to be 3, calculate your Euclidean distance, rank them out, classify them as per the major classification and then define which majority के according. तो ये जो last point था, 5th point जो मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी. It says gather the category of y of the nearest neighbor. After this it says use simple majority of the category. Simple majority of the category का मतलब क्या हुआ? Majority जिनके पास है उसी क्लास को वो फॉलो करेगा. So this is something called as simple majority law. फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बता दो. Ma'am, values with the same distance will be given rank on the basis of Same. same rank. Exactly. So if I'll calculate my distance for the value of x1 as 2 and x2 as 5, who will tell me the distance for first instance? 29. It is coming out to be 29. So you are calculating it by this. Yes. So it is equal to 4 ka square plus 3 ka 2 ka square. Sorry, 5 ka square plus 2 ka square. That is equal to 29. Next कौन बताएगा मुझे? 26. Next. Two. Next one. Again 2. Again 2. Next one. 5. 5. Only 2 people are solving. Rest others are not solving class. Okay. So let me check who will I'm respond. good with reproduction. क्या कह रहे बेटा? Ma'am, good is the prediction. I knew it. देख के ही पता चल जाना चाहिए. Okay. So who will tell me the rank?
Rank as per this instance, who will tell me the rank? We had chosen out K to be equal to 3. First rank, second rank, third rank, fourth rank. Why क्या था? कौन बताएगा मुझे? This one is bad. So it is no. It is good. It is yes. Again it is yes. Again it is yes. Again it is yes because these are तो neighbor. मैम मैम बैड Despite का the लेकिन नो fact, होगा ना. no होगा. चलो let's see. मेरे हिसाब से तो yes आ रहा है. Undoubtedly this is bad. ये क्योंकि नियरेस्ट नेबर में फॉल कर रहा है तो इसीलिए इसको हम yes लेके चलेंगे. अच्छा तो ओके मैम. मेजोरिटी किसके साथ है? यस के साथ. मेजोरिटी किसके साथ है? yes के साथ because 1, 2 and 3 are yes despite the fact 1 is bad doesn't make any difference. और अगर मैं कहूं सिर्फ 3 नेबर्स की बात करनी है इट इज 1 1. हमने इन दोनों को सेम सेम रैंक दी है इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं. इट इज 1 2 and 3. तो अगर मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 और इसको 5 देती हूँ तो भी आई हैव good more than bad class. So undoubtedly this falls in good class. Clear हुआ? यस मैम. पक्का? So can anyone let me know, is this factor k, choosing out the value of k, actually matters a lot for k nearest neighbor? जी, can I say that? k की वैल्यू डिपेंडेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी क्लास पर वो फॉल करेगा. इफ आई हैव अ यस मैम. क्लासिफिकेशन. हाँ. क्योंकि गुड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी. ओके नाउ टेल मी, k की वैल्यू ज्यादा होने से ज्यादा बेटर एक्यूरेसी आने वाली है, k की वैल्यू कम होने से ज्यादा बेटर एक्यूरेसी आने वाली है? लॉजिकली सोचना. आई हैव k इक्वल टू दिस, k इक्वल टू 4 कर देते हैं, k इक्वल टू 10 एंड इफ आई से k इक्वल टू 3, which one is better? equals to 10. k equal to 10. Okay, anyone else? Ma'am, smaller value will be better. Why smaller value will be better? Why? बहुत लॉजिकल है, सबको पता है ये आंसर. Ma'am, it gives precise ranking. Size ranking. How? Okay, class. How many people or how many families are nearest neighbor of yours? 4. You define it. Suppose if you live in a locality जहां पर all the houses are like this. यस मैम. अगर 4 डायमेंशन में है. If you stay at house number 2, तो आपके कितने nearest neighbor हैं? 2. It is just 1 and 3. It is not 4. Fourth is not your nearest neighbor. It is talking in terms of nearest. Getting my point? Now if I'll say, okay, I have 5 nearest neighbor. So definitely I can say 4 and 5 are also counted in nearest neighbor category. But ideally, हमारे nearest neighbor कितने होते हैं class? हम अपने अगर हम घर पे रहते हैं तो हमारा nearest neighbor कौन है जो immediately है? Exactly, it is always 2. So always understand. Always understand. Lesser the value of k, more is the accuracy. ऐसा हमें लगता है. So इसीलिए defaulted value is always, अगर हम k की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो अनडाउटेडली कॉम्पिटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, नेबर्स इतने आइडेंटिफाई करते करते प्रॉब्लम हो जाएगी, एल्गोरिथम के लिए एक्यूरेसी नलिफाई हो जाएगी. सेकेंडली, नेबर हद से हद 4 या 5 या 6 अच्छे होते हैं, रेस्ट अदर वी डोंट नो. ये तुम्हारे साथ भी है. अगर तुम एक सोसाइटी में, मैं जहां रहती हूँ, मेरे इमीडिएट जो मेरे फ्लोर के आसपास है मैं उनको फिर भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उससे दूर दूर जो है जो दूसरे अपार्टमेंट में रहते हैं मैं नहीं जानती हूँ. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मॉडल आल्सो डज.
It's easiest to calculate, easiest to categorize, but yes, it has some pros and cons. I hope फंडा सबको क्लियर हो गया है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Fine. So बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी अब क्योंकि क्लियर हो चुका है, तो वी कैन सिंपली गो विद machine learning algorithm and the basic algorithm that are used in the field. Then you are probably heard about k nearest neighbor algorithm. You never heard about it, but today you got to know what exactly k nearest neighbor is, which is also called as knn. Okay, now this method is more of simple. It is actually a simple technique for machine learning algorithm. We completely agree with that. I hope सबको समझ में आ गया है. So if I have 1 lakh of data, is it easy for me to calculate the Euclidean distance? Yes or no? It's easy to No, calculate. ma'am. No, ma'am. Why not? No. Why no? It's easy. बहुत easy formula है. But yes, if I have only 1 lakh data point only for x1 and x2, then it is okay. But if I have 100 of features, definitely it will be very tedious. Getting my point? समझ रहे हो? अगर मेरे पास x1, x2, x3 and so on, x of 100 तक के features हैं, so undoubtedly the calculation is more. It will create a chaos. So undoubtedly for larger data set it is not preferable. For smaller data set it is preferable. So it is a method preferred by many industry because of its ease and low calculation time. सिंपल है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस निकालना है. और तुमने देखा भी होगा हमने स्क्वायर रूट भी नहीं निकाला क्लास. मैंने कैलकुलेट किया कहीं पे स्क्वायर रूट? I didn't. It's easy to calculate. So that's the only reason it is easy. Since it is easy and computational time is comparatively low, we use it. So what is KNN? KNN is a model that classifies. So class, just understand, for classification problem only. For classification problem where we have to categorize as 0, 1, 2 or something, good or bad or true or false, KNN is used. It is not used for regression. Data points based on the points that are most similar to it. It uses the test data to make educated guess on what unclassified point should be classified as. I hope सबको समझ में आ गया है. हमारे पास लेबल नहीं था, लेकिन हमने लेबल यूज करके उसको कैटेगराइज कर लिया कि वो कौन सी प्रॉब्लम में फॉल करेगा. Now, what are the pros and cons? I hope till this point it is clear to everyone why it is being called as a classification problem. Yes, ma'am. Fine. So now the pros and cons. What we mean by pros and cons? Pros are the positive points and cons are the negative points. So positive point is easy to use. Calculate time is very less. Doesn't make any assumption. हमने कहीं नहीं बोला, जबकि हमने naive bias में बोला था कि we assume that they are linearly independent. हमने लीनियर रिग्रेशन में भी कुछ और मोर और लेस हमने अज्यूम कर लिया कि ठीक है, ये हम इसे मान लेते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. बट हमने केएनएन में ऐसा कुछ नहीं बोला वेदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. हम कोई assumption नहीं लेके चलते. Yes, ma'am. Then the cons, that is the negative point. Accuracy depends on the quality of data. Getting my point? अभी तो सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल क्लास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही डेटा पॉइंट्स पर रैंक 1 आ रही थी. What if 4 values got the values as rank 1? Suppose इसकी भी वैल्यू ये होती और ये भी यही होता, तो कितनों को मैं rank 1 देती? I can't work on that ना, because I need 4 values to be called as a neighbor. Despite and क्यों उन्हें अलग अलग काउंट करना जरूरी है? Because they have different data points. So quality of data is very much required. Getting my point, class? Clear है? Yes, ma'am. Then it is said कि must find an optimal value of k. K is very much required. By default, it is equal to 5. I can't go for k equal to 100 or k equal to 1. 1 तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि एक नेबर से तो काम नहीं चलने वाला ना. रैंक किसको देंगे? एक तो रेफरेंस के लिए होता है. So इसलिए वो भी नहीं हो सकता. तो ऑप्टिमल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट वी हैव टू आइडेंटिफाई. Poor at classifying data points in the boundary where they can be classified one way or another. So अभी क्या हो रहा है? Bad भी दिख रहा था और हमें good भी दिख रहा था. इस पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर लो या इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर लो. डेटा का रैंक इज सेम, गुड भी दिख रहा है बैड भी दिख रहा है. सो किसको फॉल करेगा वो? आई डोंट नो.
और लॉजिकली तो मुझे ये कहना चाहिए सिंस दिस इज बैड सो ये वाली वैल्यू क्योंकि रैंक 1 है तो हमें इसे भी बैड बोल देना चाहिए, बट वी कांट डू दैट। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स द ओनली कॉन विद इट हैज। हाउ आर वी क्लासिफाइंग इट? नाउ दिस इज द डेटा सेट दैट एक्चुअली वी हैड गिवन, हमने 2 और 5 अभी दिया था, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी क्लासिफिकेशन के लिए है, इधर इट इज कंप्राइजिंग फॉर the red bubbles or it is comprising for green bubbles. So this is basically being done by the KNN algorithm. Now कल की क्लास में मुझे क्लास एक चीज याद दिलाना मैम कि मेरे को पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एक बार बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स। So it is considered to be non parametric for the time being by the name, just understand it is a non parametric and it is a lazy learning। कौन बताएगा lazy learning क्या होता है? So what we mean by these two terms, so I am not going with the parametric right now. Non-parametric, basically there is no assumption. So if non-parametric models are called as non-assumption, तो parametric कौन से होंगे? Parametric models will be called as Assumption. with Assumption. assumption. So basically this is the KNN method that is required for the classification model and it is non-parametric by nature. That means it is not assuming anything. हमने कहीं पर भी रैंक 1 रैंक 2 अज्यूम करके नहीं किया, हमने सब कुछ कैलकुलेटिव मेजर पे किया। So whenever we are doing something on the basis of calculative method, then we are saying it is a non-parametric. If we are not doing everything on the basis of the calculation, then it is basically using the assumption called as parametric model. लेजी लर्निंग बहुत बार सुना होगा, लेजी प्रोग्रामिंग होती है। कौन बताएगा लेजी लर्निंग का मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट गुड इन जनरलाइजेशन। कुछ भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर टू दिस क्वेश्चन वट एवर आई एम आस्किंग राइट नाउ, बट बहुत आसान है। कौन बताएगा कि माई नेबर्स आर रियली गुड? Raise your hand. My neighbors are really good. My immediate neighbors are good. They are very good friends of ours. They are family friends. कोई ऐसा यहाँ पर जिसको लगता है कि ऐसा कुछ है? No, ma'am. Why? And we all have a very good experience with our neighbors. So we know that distant neighbors are very good, but nearest neighbors are not good. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so if it is true, so हम इसका मतलब हम सबका experience है. So can I say generalized way में कि yes, the nearest neighbors are good? I can't. I can't say the distant neighbors are good. I can't. तो जनरलाइजेशन इज वेरी पुअर, बहुत मुश्किल हो जाता है लेजी लर्निंग के लिए। तो हमने क्या कह रखा है, इसलिए हमने रैंकिंग किसको दी है? जिसका कम डिस्टेंस होगा हमने उसको तो रैंकिंग दे दी है फर्स्ट, जिसका दूर का डिस्टेंस होगा उसको हमने रैंकिंग दी है लास्ट। कि हम क्या कह रहे हैं, एक्चुअल सिनेरियो में जो डिस्टेंट नेबर्स हैं दे आर गुड, कैन बी आवर फैमिली फ्रेंड्स, बट नियरेस्ट नेबर वी कांट गो फॉर इट बिकॉज उनको हमारे घर की सारी बातें पता होती है, सो दे कैन सिंपली प्रोपोगेट टू अदर्स। सो दैट्स द ओनली रीजन वी आर नॉट गोइंग फॉर नियरेस्ट नेबर के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है। तो लेजी लर्निंग का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मेक्स नो जनरलाइजेशन। सो हर बार वो कैलकुलेट करेगा। इसीलिए जब तुम बोलते हो फलानी आंटी इज रियली गुड, it is on the experience, on the way you are calculating. Okay, she comes very at the time of need, she is there, she brings out certain good things at times, बहुत ज्यादा बातें नहीं करती हैं, ये नहीं करती हैं वो, तो भी सिंपली से ओके नाउ कैलकुलेटिव मेजर पे हम बात कर रहे हैं। सो जनरलाइजेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे जो इमीडिएट पड़ोसी लेफ्ट में रहते हैं रियली गुड, नो आई कांट से दैट। तो जनरलाइजेशन नहीं होगा। So little training involved when using this method. So training has to be there. Where to use KNN? Recommendation system. कौन recommendation system जानता है? Everybody use Netflix, Amazon. Yes, ma'am. Amazon Prime पर एक मूवी देख लो, नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली बताएगा since you had watched this, these are also the following category that you can watch. आता है? Yes, ma'am. It recommends you. Same goes with Myntra also. कोई भी ऑनलाइन परचेसिंग करते हो तो उसमें भी पता चलता है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ब्लड फोटोग्राफ पे भी आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये मेरी फ्रेंड है। गूगल फोटोज। एग्जैक्टली। सो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? KNN। जो इतने कम डिस्टेंस पे दिखेगा हम उसको मेजर कर देंगे। सो
डिस्टेंस इज नॉट द क्राइटेरिया. बेसिकली जो एक फीचर से दूसरे फीचर से ज्यादा सिमिलर होगा उस जगह पे उसे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई वॉन्ट टू वॉच अ कॉमेडी मूवी, I know, name some comedy movie. Golmaal, Golmaal 2. So I know they are almost on the similar pattern. I can say yes, they are comedy one. वो है या नहीं है, that is a different aspect. So जितनी similarity ज्यादा होगी उतना rank ज्यादा होगा. जितना rank ज्यादा होगा उतना KNN algorithm अच्छा काम करेगा. This is what exactly it does. So I have three different points. जैसे अभी हम लोगों ने करा था, हमारे पास good और bad था, तो I'll simply say this is my good, this is my bad, this can be called as worst. I have another data point. अगर उसका distance इस point से ज्यादा मिलता है तो it will be going to good category. अगर उसका point यहाँ ज्यादा मिलता है, it will be going to bad category. If it is falling to this, having the similar category, similar points like worst one, so it will be falling to the worst category. Clear हुआ? So no mathematics behind it. It is only working on the Euclidean distance. We know how to calculate the Euclidean distance, and then after that, calculating the Euclidean distance, we are going with the ranking of it. So ideally, what we are going for the calculation or implementation of this algorithm is find a data set that will be easy to work with. Ideally, one with lots of different data point and label data. Why? जितने ज्यादा डिफरेंट पॉइंट होंगे उतना बेटर डेटा होगा, उतना बेटर डिस्टेंस आएगा, उतना बेटर रैंकिंग सिस्टम होगा. जितना कम डेटा पॉइंट होगा, जितना कम डिफरेंट पॉइंट्स होगा, उतनी ज्यादा रैंक सिमिलर आएगी, कैलकुलेशन और उतनी ज्यादा मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है. Second is figure out which language will be easiest for use. This is for the case of Python. So we can simply go for R or Python. We can simply work on that. Do your research. It is important to learn the correct practices for using this algorithm, so you are finding the most accurate result from your data. कैसे? क्योंकि हम assumption use नहीं कर रहे हैं, so we have to identify accordingly. So हमारा data set इस तरीके से काम करने वाला होना चाहिए. Lastly, this is the fundamental algorithm and it is dependable for many reasons like ease to use, quick win calculation for the machine learning. But nowadays, comparatively, it is not being used. बहुत कम यूज किया जाता है. बहुत ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पर डेटा सेट इज नॉट मच मोर, आई मीन कुछ लैब्स में होगा तो शायद यूज कर लिया जाएगा, वरना हम इसे यूज नहीं करते क्योंकि देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग कॉल्ड एज क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग. और आज की डेट में हम लोग कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे तुम्हारी क्लास पर कस्टमर सेगमेंटेशन करना है तो व्हाट आई विल डू, मैनेजमेंट, finance, microbiome, food technology, computer science, mathematics, stats. Now these are the segmentations. These are the segments of the data science data set. So जिसका for example अर्पिता belongs to management. So अर्पिता का जो भी features रहा होगा, they belongs to the management sector. So categorized in management. Similarly, Gauri belongs to suppose computer science, so she is having all the features related to the computer science. This is something called as customer segmentation. So there it is being called as k-means. Over here in supervised mode of learning, it is being called as KNN. So KNN is basically a supervised mode of learning. It requires a training. It doesn't use a assumption or an assumptions. It is easy to use. It requires great amount of learning along with the proper data set. That means more of data set, more of data points with different data points. It shouldn't have more of similar points. Ranking has to be there. Minimum distance calculation has to be there. After that, you will define the ranking. Then you are classifying the model. Then according to the majority classification, you will be defining the class of the undefined labeled point. Is it okay, class? Clear hai? Fine. So this is basically the algorithm. Now, homework. बहुत आसान है. We'll be doing the algorithm. I mean, we'll be going for the practical. What I want from you people, accuracy तो तुम identify करोगे ही करोगे. Accuracy कैसे निकाला जाता है नहीं करोगे तो on Friday I am going for it. I want you people to identify for KNN
इसके लर्न के अंदर फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, जैसे हमने लिखा हुआ था फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल import linear regression. Fine. Similarly, I want from sklearn knn कैसे आएगा, तो simply write sklearn knn, वो ऑटोमेटिकली खोल के बताएगा, गूगल पे अपने आप आएगा. चेक इट आउट कौन सी मॉडल में knn फॉल करता है, k की वैल्यू डिफॉल्ट क्या है. I want this from you people on Friday. Clear है class? Yes, ma'am. And lastly, accuracy. Again, accuracy will fall in some sklearn model. Metrics में आता है. There is something called as metric. वहां पे चेक करना. अब मैं नहीं बताऊंगी exactly क्या है. थोड़ा सा वर्कआउट तुम्हें करना पड़ेगा. Clear है class? Yes, ma'am. Yes, yes, sir. Fine. So it's almost 3:42. Let me take your attendance now. Ruhi, Present, ma'am. Prachi, Present, ma'am. Victor, Shalini, भावना, गायत्री. भावना, मैंने ना आज अटेंडेंस दे दी है बेटा. नेक्स्ट टाइम इफ आई आस्क यू समथिंग एंड यू आर देयर एंड यू आर नॉट आंसरिंग ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. मैं अटेंडेंस कम कर I'm देती हूँ. present. कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है.